Assalamu alaikum. How are you, students? I hope all of you are well. So, in this lecture, we will continue the same chapter that was operating system, right? So, let's begin. In the last lecture, we were discussing commonly used operating system, right? Commonly used operating system. We have discussed DOS, disk operating system. Now, we will continue with the next operating system, that is Windows operating system. All of you must know about Windows, right? Windows is the most common operating system. Mostly we use Windows operating system. मतलब हमारा operating system के साथ जो एक exposure है उसमें ज़्यादातर हम विंडोज़ ही का नाम जानते हैं और विंडोज़ ही को यूज़ करते हैं. Like in the mobile phone, mostly we use Android system. In the same way, in the laptops, we mostly use what? We mostly use Windows operating system. Windows operating system was first developed in 1980s by Microsoft. The main advantage of this system was at that time that it provides a graphical user interface. As we discussed in the last chapter, that the disk operating system that was called DOS was the first operating system, but it does not provide a graphical user interface. It provides a command line interface. Command line interface means that it shows a black screen and you have to write a whole command, whole line to perform any action. Commands, some specific commands were given in the DOS operating system that was defined to work with them. So that was difficult to remember those commands. But now, what was the advantage of Windows operating system? That it provides a color interface that we called GUI, that is graphical user interface. Of course, that was very user friendly, means it introduces a mouse pointing device, right? Input device, mouse. Mouse was first introduced in with the operating system, which Windows. Windows introduces mouse for input. So it was very easy. It was very easy to give input through mouse. You just click something and it open up. You just click some cross and it closes. Wherever in the DOS, you have to write whole command to open anything, to close anything. So Windows was very user friendly. That's why it was so commonly known nowadays even. ये इतनी ज़्यादा मशहूर इसीलिए हुई और इतनी ज़्यादा इनको लोगों ने इसीलिए पसंद किया कि ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली थी और लोगों को इन पे काम करना बहुत आसान लगता था. इसलिए इसको कहा गया कि this interface is user friendly. ठीक है? The very big advantage of this was also this, that no need to memorize commands like DOS. Obviously commands की ज़रूरत ही नहीं थी. आपको just एक mouse click से input देनी है और output लेनी है, तो आपको commands याद करने की ज़रूरत नहीं है. So it was very big advantage to not to memorize commands like DOS. It also allows to give commands through icons, menus and buttons. ये जो हमें आज icons नजर आते हैं, menus नजर आते हैं, buttons नजर आते हैं, all these were introduced with Windows operating system because Windows introduces mouse, click, input, pointing input device. एक click के साथ input देने का जो concept है वो
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ने दिया था। इस वजह से जो है ये आइकन्स, मेन्यूज, बटन्स जो आज हमें कलर्ड इंटरफेस बहुत आसान सा नज़र आता है, ये विंडोज़ के साथ डेवलप हुआ। ठीक है। अब अभी तक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। बिल्ट इन विंडोज़ जो हैं वो लैपटॉप के अंदर आती हैं और आप जो है उनको यूज़ करते हैं। इस वक्त जो सबसे कॉमन जो एक है ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी जो इसका लेटेस्ट है वो विंडोज़ 10 है। और विंडोज़ 10 इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, बहुत आसान इसका इंटरफेस है। ठीक है। तो आप लोग इसको यूजर इंटरफेस के साथ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप काफी हद तक नोन हैं, आप इसे जानते हैं। नेक्स्ट वन इज which we are going to discuss is Mac OS, Macintosh operating system. In short, for Macintosh operating system, Macintosh operating system को हम क्या कहते हैं? Mac OS यूज्ड इन एप्पल कंप्यूटर्स। जो आपकी एप्पल मोबाइल्स, एप्पल के जो मोबाइल्स हैं, मींस आईफोन, आईपैड्स, जो मैकबुक्स हैं, उन सब के अंदर ये एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं और एप्पल के अंदर ये यूज़ होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली जी डिफरेंट है विंडोज से। इट इज़ ऑल्सो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। और आपको सब जो है वो सब चीज़ें उसी तरह मेन्यूज, आइकन्स, बटन सब कुछ प्रोवाइड करता है, बट it is different from Windows. So if Windows user use Mac OS, it will be difficult for him. And if Mac user जो iPhone के और iPad के और MacBook के user हैं, जो वो Windows को use करेंगे, obviously that is also difficult for them because there is a change between both operating system. Latest version जो हमारे पास Mac OS का है, that is OS X, right? OS X. The most advantage of Mac OS over Windows is that these are rarely attacked by virus. These are more secure than Windows. Rarely attacked by virus or hackers. बहुत कम होता है कि ये कहीं rarely किसी वायरस का अटैक इनके ऊपर हो या इनके ऊपर किसी हैकर का अटैक हो। बहुत ज्यादा सिक्योर है। ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये कोई भी एक्स्ट्रा फीचर होगा तो ऑब्वियसली इट्स मोर एक्सपेंसिव देन विंडोज कंप्यूटर। वो लैपटॉप्स जिनके अंदर बिल्ट इन विंडोज आती हैं आर चीपर देन दोज मैकबुक्स विच हैव बिल्ट इन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं लैपटॉप्स के अंदर आता है जिसमें बिल्ट इन इसकी सपोर्ट होती है। If you buy a laptop with Windows, built-in Windows, and if you want to install Mac OS, you will face problem in that because hardware is not supporting for that. A large number of application software are available for Windows, but very few are available for Mac. All those who are iPhone users, they know very well that in Android, there are a huge number of applications, but for iPhone, there are those applications are paid as well as limited. In the same way, there are huge number of applications developed for Windows, but very few are available for Mac. हम जितनी आसानी से विंडोज के ऊपर कोई चीज डाउनलोड कर लेते हैं या उससे काम कर लेते हैं, मैक उससे डिफरेंट है, उसकी एप्लीकेशन का नंबर थोड़ा कम है। The last one which is given in your book is Unix. Unix was developed in 1970 and it was written in C language, right? It provides greater processing power and better security than Windows operating system.
विंडोज़ के ऊपर इसका भी ये एडवांटेज है कि ये जो है वो ग्रेटर इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है और इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और ये ऑब्वियसली जब सिक्योर हैं तो वायरस प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। Less popular in microcomputers on which Windows is pre-installed when they are sold. जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर ये कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका ये है कि अगर आपने लैपटॉप लिया है प्री इंस्टॉल्ड विंडोज के साथ और आप उसको यूनिक्स या लिनक्स में चेंज करना चाहते हैं, यू कैन चेंज दैम। और लिनक्स जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है, मतलब जो एक नेटवर्क मैनेजमेंट की जाती है, एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है, उसकी सिस्टम प्रोग्रामिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है लिनक्स के अंदर। लिनक्स के अंदर आपने अगर कोई सिस्टम बिल्ड करना है, मतलब आपने सर्वर क्लाइंट का एक पूरा सेटअप बनाना है, तो वो सिस्टम जो बनाया जाता है ना, वो उसके लिए विंडोज सर्वर भी मौजूद हैं। लेकिन लिनक्स के अंदर जो सर्वर बनाए जाते हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है और उनकी वर्किंग, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत होती है, तो इसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी थी कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें क्या आती हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसर, पैरेलल प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस और एम्बेडेड ओएस। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अब a software that groups same types of jobs together in batches and executes them one by one, provides an easy and efficient way to process same types of jobs. For example, at the end of month, bank's computer system prints bank statement for each account holder. अच्छा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यही है कि आपकी एक तरह की जॉब्स, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे बैंक की एग्जांपल दी गई कि बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है, अब ये सब एक जैसी एक तरह की जॉब्स हैं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक कंप्यूटर को अलाउ कर दी गई। अब इनका एक पूरा बैच बन गया। जिस तरह हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को एक पूरा बैच है, 2020-21 का एक बैच है जिसे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो एक तरह के कोर्स को पढ़ रहे हैं, एक तरह की क्लासेस ले रहा है, एक तरह के टीचर्स उसे पढ़ा रहे हैं, उसका सारा सिस्टम एक तरह से चल रहा है, ऑल इज सेम। ठीक है, तो ये एक बैच है, इस बैच को हम पढ़ाएंगे, इसके एग्जाम्स होंगे और ये सारा बैच एकदम एक साथ ही पास आउट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एक बैच। इसी तरह अब जब एक तरह की जॉब्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मुख्तलिफ तरह की जॉब्स आई, कुछ प्रिंट्स की जॉब आई, कुछ उसके पास स्कैनिंग की जॉब्स आई, कुछ उसके पास जो है वॉइस इनपुट्स आई। अब उसने क्या किया, बैचेस बना दिया इनके, प्रिंट के बैच अलहदा कर दिया, स्कैनिंग का बैच अलहदा कर दिया, उसने जो वॉइस इनपुट आई है उसका बैच उसने अलहदा कर दिया। अब उसने इन बैचेस को ऑपरेट करना है। पहले उसने बैच लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंट का बैच लिया, उसने इस पूरे बैच को कंप्लीट किया, प्रिंट दिए, फिर उसके बाद उसने दूसरा बैच लिया वॉइस इनपुट का, उसको सारा काम किया, फिर उसने बैच लिया स्कैनिंग का, स्कैनिंग की जितनी इनपुट्स आई थी उनको लिया। अब उसने सब बैचेस में उसने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है इसको, जॉब्स को। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? यू कैन फर्दर स्टडी इट फ्रॉम बुक। अच्छा, one thing more, that my definitions and my explanation may slight differ from your book, because some things I feel that these are not in good explanation in book. बुक में वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं की गई, even these are confusing there. So those were confusing for me. That's why I changed definitions, and
for your better understanding, right? For your better understanding, if you understand what does it mean, then you will write it in your own words even, right? So first, do not confuse my lecture with your book. Words will be different, definitions and the explanation will be different. Okay? So don't confuse it. Just listen to the lecture, understand what I am saying, then read your book. If you understand what is written in book as well, तब आप बुक वाला लिखें, अदरवाइज आप वो लिखें जो मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है, अपने वर्ड्स में इस चीज को समझें और उसके बाद अपने वर्ड्स में लिखें. नेक्स्ट वन इज multi-programming operating system. Okay, now what is multi-programming operating system? Generally, what does mean multi-programming means that program operating system which executes more than one program, multi-programming. So we can define it formally like an operating system that loads one or more programs in main memory and executes them. And an operating system that loads one or more program in main memory and executes them with them using a single CPU, central processing system. This point is notable, right? An operating system that loads one or more programs in main memory and executes them using a single CPU. अब होता क्या है? होता ये है कि आपके पास एक CPU है. आजकल जो आपके पास मोबाइल्स आ रहे हैं ना, वो कोई क्वाड कोर है, कोई ऑक्टा कोर है, मतलब उसके अंदर एक से ज्यादा CPU मौजूद हैं. ये उस प्रोग्रामिंग की बात हो रही है जब आपके पास एक CPU है और उस एक CPU ने एक से ज्यादा काम करने हैं. अब होता क्या है कि इसके पास लाइन आती है, एक क्यू आता है. क्यू मींस फीफो जो मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जैसे एक लाइन लगती है ना, जो पहले आके खड़ा होगा उसकी पहले बारी आएगी, जो बाद में आएगा उसकी बाद में बारी आएगी. इसको हम कहते हैं क्यू. ठीक है, इसको हम कहते हैं क्यू. एक और होता है वर्ड यूज किया जाता है, शायद आपने कहीं सुना हो, स्टैक. ये थोड़ा सा बात डिफरेंट हो जाएगी आपके टॉपिक से. स्टैक, एक होता है स्टैक और एक होता है क्यू. स्टैक का रूल है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जैसे आपने एक बॉक्स को पैक किया, आपने उसके अंदर चीजें रखी हैं, जब आप उसे ओपन अप करेंगे तो कौन सी चीज पहले निकालेंगे? जो सबसे एंड पे रखेगी थी. ठीक है, लाइक यू आर पैकिंग अ बॉक्स and putting like candies inside and you pack them. When you open that box, what you will take out? Which candies which you were put in the last, जो आपने सबसे आखिर में रखी थी कैंडीज, आप उनको सबसे पहले निकालेंगे. That is called last in first out. आखिर में रखा था लेकिन पहले निकाल लिया. This is called stack. Understand? This is called stack. Here we are talking about queue. It means first in, first out. पहले आइए, पहले पाइए. जो आपका पहले लाइन में आके लगेगा उसकी पहले बारी आएगी. This is called queue. अब the CPU executes only one program at a time and others waiting in a queue. अब हुआ क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है, एक लाइन है जॉब की, जो पहले आता है सीपीयू पहले उसका काम करता है और बाकी उसका इंतजार कर रहे होते हैं. ठीक है, when one program is busy in input output operation, the CPU executes an other program that's in queue to use CPU time efficiently. मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग का मकसद है कि CPU टाइम को efficiently यूज किया जाए.
इसका मकसद है कि सीपीयू टाइम को एफिशिएंटली यूज कर दिया जाए। अब क्या है कि सीपीयू के पास बहुत सारी जॉब्स आई हैं। एक जॉब को उसने कहा कि इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत है, कोई इनपुट लेनी है कोई आउटपुट देनी है, उसने उसको साइड पे करके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की तरफ भेज दिया। इतने में जो दूसरा बंदा खड़ा था उसने दूसरी जो जॉब थी उसका काम करना शुरू कर दिया। जब वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वाली जॉब फारिग होके आई उसके पास, तो उसने उसको थोड़ा वेट करवाया, इसका काम कंप्लीट किया, इसको उसने फॉर एग्जांपल एएलयू के पास भेज दिया और उसका काम कंप्लीट करके उसको फारिग किया। अब होता क्या है कि सीपीयू ये नहीं है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के की तरफ भेज के वो उसका इंतजार करेगा कि वो वापस आएगी जॉब अपना काम कंप्लीट करके, तो फिर मैं उसका काम करके तो फिर नेक्स्ट करूंगा। ये तो फिर कंप्यूटर ना हुआ ना, ये तो फिर कंप्यूटर ना हुआ, ये तो फिर वही है कि आपने एक बंदे को ऑफिस के बाहर बिठाया है, दूसरे को जो है उसको वेट करवा रहे हैं, मैंने चाय पीनी है, मैंने नाश्ता करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। अब आपका ऑफिस का टाइम बेशक सारा ज़ाया हो जाए, आप लोगों ने अपना काम करना है, आपने दूसरे का काम नहीं करना। इन द सेम वे अगर ये काम हो तो फिर तो कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं। कंप्यूटर ये काम करता है कि वो अपना एक सेकंड ज़ाया नहीं करता। अगर उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए भेजी है जॉब को, उसे 2 नैनो सेकंड लगने, लेकिन वो नैनो सेकंड उसने ज़ाया नहीं करने, उसने दूसरी जॉब को लेके तो उसका काम करके उसको दूसरी तरफ भेजना है, उसको चेक करके और फिर अपना आगे काम करना है। दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Next one is multitasking operating system. अच्छा, both of them are confusing. मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग, अब इस चीज में डिफरेंस देखिएगा और इसको समझिएगा। Multitasking means concurrent execution of multiple processes by one user on the same computer utilizing multiple CPUs. अब वहां क्या था कि सिंगल सीपीयू था जिसने मुख्तलिफ काम करने थे। ठीक है, सिंगल सीपीयू था, उसने मुख्तलिफ काम करने थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल सीपीयूज हैं और काम एक है। समझ आई? अब यहाँ पे आपने चार, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वाड कोर है, ठीक है, 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं, एक जॉब आई है। अब उन्होंने क्या किया, उस जॉब को उन चारों ने मिल के कर लिया, तो वो जॉब कंप्लीट हो गई। जहां पे वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक सिंगल सीपीयू था वो 2 सेकंड लेता था, इन्होंने आधे से सेकंड से भी कम टाइम में चारों ने मिलके उसको किया और वो काम कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ, प्रोसेसिंग फास्ट हो गई। मिल के जो काम किया जाए, वो कहते हैं ना 1 1 2 11 मीन्स मिल के जब काम किया जाएगा, दैट्स ऑब्वियसली फास्ट प्रोसेसिंग। For example, in a multitasking operating system, you may work on a Word document with one program while listening to music at the same time with another program. अब आपने एक तरफ आप वर्ड के डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, वो काम भी आपका साथ साथ चल रहा है, दूसरी तरफ आपने म्यूजिक लगाया हुआ है, दैट्स ऑल्सो डूइंग। अब आपके प्रोसेसर्स ने काम बांटा हुआ है, कोई वर्ड का काम कर रहा है, कोई म्यूजिक का काम कर रहा है। यू डू नॉट फील anything that your computer has some problem with all this. It will work as efficiently with one program as efficiently with 2 or more programs. It is based on the concept of time sharing because multiple processes or tasks can be switched accordingly to at a regular interval time so that the user get the idea that they are performed concurrently. Now you will get idea that all these programs are getting the same time, although it's not. That's something happening at the back end. आपकी processing को तेज करने के लिए multiple processes काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जो आपके सीपीयू हैं वो सब सीपीयू आपके काम को मैनेज करने के लिए बिजी होते हैं, राइट? Here is a difference between multi-programming versus multitasking. In multi-programming, multiple processes can run concurrently at the same time on a single processor, whereas in the multitasking,
when more than one task be executed at a single time utilizing multiple CPUs, right? यहाँ पे एक प्रोसेसर है, एक सीपीयू है, और यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू है. It is based on the concept of context switching, मतलब एक काम को छोड़ के दूसरे को स्विच कर लिया, एक को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को भेज के की तरफ भेज के दूसरे काम की तरफ उसने स्विच कर लिया. It is based on the concept of time sharing. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टाइम शेयरिंग हो रही है. टाइम शेयर कर लिया उन्होंने, एक काम को करने के लिए 2 सेकंड, एक काम के 2 सेकंड, दूसरे काम के आपस में टाइम शेयर कर लिया. मल्टीपल प्रोग्राम्स reside in the main memory simultaneously to improve CPU utilization so that CPU doesn't sit idle for a long time. I told you that in multi-programming, CPU never sit idle, right? It will try to perform efficiently. It enables execution of multiple tasks and processes at the same time to increase CPU performance. It will also increase CPU performance, multitasking, but in the some different way. It utilizes single CPU for execution of processes. It utilizes multiple CPU for task allocation, right? It takes more time to execute the processes. It takes less time to execute the task or processes. Why? Because multiple CPUs are working, whereas in multi-programming, one CPU is doing different jobs. The idea is to reduce the CPU idle time for long as possible, whereas the idea is to allow multiple processes to run simultaneously in time sharing, via time sharing, right? So this is the difference between multi-programming and multitasking. I hope you will understand and do not confuse both these multi-programming and multitasking, right? So rest of the things in the next lecture, inshallah. Read them, try to understand them, and try to develop writing skills by your own. I do not recommend cramming, right? लेकिन आपकी बात वो हो जो कि समझ आए. If you are not understanding book words, like bookish language आपको समझ नहीं आ रही, और आपको अगर मेरा लेक्चर समझ आ रहा है तो आप इस चीज़ को लिखें. अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही, बुक की आ रही है, तो आप उसको लिखें. और अगर आप इसको समझ के अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, डू दैट ऑल्सो, बट यू हैव टू राइट अ करेक्ट थिंग. अपनी कहानी नहीं डालनी. जो कंसेप्ट है उसको अपने तरीके से बयान कर सकते हैं, जैसे वैसे लिखें. ठीक है? All the best, and we'll meet you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz. Till then.